Welcome, guys. Long time since United Bad Time Talks have done a live show. थोड़ा पर्सनल चीजों में सब अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे. I got a new job, so I shifted to Bangalore. Congratulations. Vignesh is still crying because it's not gonna be Pochettino. चलो, कोई तो खुश है। So Vignesh, खुश क्यों नहीं होंगे भाई? एक अगर सही बड़ा विजन हो तो क्रिस सेज कोई वशीकरण मंत्रा दो पेप को वश में करने के लिए लीग जितवानी है. Let's hope so. Anyway, so बिल्कुल। before I come to comments, uh, so long time guys, sorry for being a little inconsistent over the last few days. uh, Eric Ten Hag That's to it. Manchester United, it's anything but done. Yeah. Vignesh, thoughts as a Pochettino stan, what are your thoughts? Look, I've seen it. I've said it multiple times कि मैं दोनों के साथ ही खुश हूँ. Both are good coaches. But I think जो कोच हम देख रहे हैं has been, शुरुआत ही उनकी इंटरनेशनल ब्रेक से हुई है. I'm actually happy कि we're trying to get it done as soon as possible. I think ये already done deal है. It's already signed and sealed. It's just that they're waiting for Ajax's domestic season to end because obviously in the middle of that they're not gonna बोल देंगे कि हाँ भाई ये जा रहा है because that will be a big distraction for them. They वो अभी भी लीग और डोमेस्टिक कप जीत सकते हैं, so they don't want to get that unnecessary attention on them. So I'm Attention happy, is already there. not gonna lie. Yeah, of Attention course, is of course. already there. It's कोई फर्क नहीं आज पड़ता है कभी भी आज अनाउंस करे. आज ही देख लो आप, राल्फ ने भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, यूनाइटेड ने जितने भी लोगों से बात की है सभी टॉप मैनेजर्स है, अगर उसमें टेन हाग भी है तो वो भी टॉप मैनेजर है. सो आई डोंट नो हाउ व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट, बट या आई थिंक इट्स अ डन डील. फब्रिजियो भी मल्टीपल टाइम्स बोल चुका है, डेविड ओनस्टीन भी मल्टीपल टाइम्स बोल चुका है कि ऑलमोस्ट अ डन डील, लेकिन फाइनल डिटेल्स पेंडिंग है जो कि आई एम प्रीटी श्योर वो भी हो चुके हैं. It's just that we're waiting for a proper time scale to announce this. It's about maximizing clicks now. Uh, Yeah, yeah, और बात करते हैं, there is the biggest development that is there is कि transfers में एरिक टेन हैग is already involved. ब्रूनो का which is कॉन्ट्रैक्ट में he has played a part. I, this ये वाले में I slightly disagree or slightly partially different opinion है. Regardless of the Hmm. manager, you want to keep Bruno. Okay, as a club, regardless of the manager, you want to keep Bruno. So I don't think उसमें टेन हाग अगर नहीं भी बोलता तो क्लब would have said कि ठीक है भाई ब्रूनो तो चले जा. I don't think so. Any manager would love to have Bruno Fernandes, or any club would think twice before selling Bruno Fernandes. What about Luke Shaw and Rashford? उनका deals भी are being discussed. Last season लगा था कि Luke Shaw has already finally found his peak and hopefully he can keep up with the consistency, but ये season again he's fallen down the pecking order. वापस से अभी वो injured है. He will be out for another 2-3 weeks. उसका same ligament में issue है जहाँ पे he picked up a fracture. So the season is already done. I don't think anything can be, उसके personal side of way से I don't think anything he can do. I may sound a bit harsh, but I think it's time to sell Luke Shaw. Rashford nahi, because I think he still deserves time, and I think under Ten Hag he'll do better because Vignesh, he I likes to think the play with a good. situation is लूक शॉ का सेल से पहले इतना पोजीशन में रिक्वायरमेंट है. राइट बैक वुड बी प्रेफर्ड, अ सीडीएम सीएम स्ट्राइकर वुड बी प्रेफर्ड, टू Yeah, स्ट्राइकर्स रादर. तो लेफ्ट बैक का जो नीड है वो पैकिंग ऑर्डर yeah, में बहुत नीचे है. एंड एज yeah. क्रिस सेज, गिव 3-4 सीजंस फॉर रीबिल्ड. इम्पॉसिबल इन अ No, क्लब no, लाइक no. मैनचेस्टर यूनाइटेड. This is too much. अगर टॉप 4 नेक्स्ट ईयर भी नहीं आता ना एरिक टेन हैग से, he will be questioned. He'll be close to being sacked if it doesn't get top 4 next season. कितना भी Yeah, अच्छा बैकग्राउंड काम कर ले, back it's to back about the season results. you cannot. Back to back season you cannot afford to miss out on the Champions League. क्रिस का अनदर कमेंट है, पॉगबा को निकालो भाई, जा रहा है वो, खत्म है. वो पॉगबा तो चला स्टोरी गया. इज फाइनली डन. थैंक Yeah. गॉड.
He's आशिक finally gone. आशिक says अर्डेन स्मिथ जैसा बेवकूफ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा. Dude, give it to Tewatia. I mean, two sixes and two balls. Fuck. Gujarat Titans 3-3. Vignesh, fuck off. 3-3. I, I don't follow IPL, so it doesn't matter. So I'm from Gujarat, so my biasness is there. Yeah. Uh, Ashik is asking two words about Odin Smith. Match winner. So, like Pochettino was a match winner for Real Madrid, he is a match winner for Gujarat Lions. Titans, I Oh always man. say Gujarat Lions, man. Uh, it's a custom made jersey जो मतलब क्लब क्रिकेट मतलब ऐसे खेलते हैं ना Hmm. फ्रेंडलीज टाइप्स उसमें दिस इज अ कस्टम मेड टी शर्ट इट्स नॉट अ इंडिया का कोई टी शर्ट. अमर को आंसर कर रहा था मैं. Mhm. Hmm. People are having a go at Odin Smith. I think they are not Gujarat fans. Uh, so let's get into some of the quotes of Ralf Ragnick from the Yeah. conference today. So Ragnick said that for tomorrow, it's definitely the most important part: character, energy, and commitment. Winning the game in the atmosphere that will be probably pretty similar to the one at Leeds. Yeah. Could be because वो वो क्या बोलते हैं relegation से fight कर रहे हैं फिलहाल तो, so the atmosphere will be tense. You never know, they already back to back games हार चुके हैं. uh, हमारी situation लेस्टर के साथ भी same थी. They were losing games, but they ended up getting a result against us, almost end up winning against us. So top four तो I don't, it feels more and more distant, more and more likely कि we are not gonna get top four. कि Oh, Arsenal I've still have given yet up to on play top four. Liverpool and Spurs. Sorry, I've given up on top four. I think Spurs are there's a favorites. slight दो part of बड़े me गेम है. which feels हाँ कि Arsenal can still drop points, so as Spurs. So that, पर हमारा problem यही रहा है throughout the season. We are depending on other results rather than us picking us points. तो ये चूतियापा बंद होना चाहिए अभी जल्द से जल्द. We have to, make sure we make most out of each and every game from here on, because नहीं तो that's वैसे भी हमने hopes खो ही दिए top four के लिए. So I just hope कि Since we we start are getting the talking about results. top four and transfers, uh, top four जान दो. I don't want to even Yeah, discuss top four right now. Uh, Ashik is asking Calvin Phillips, Chouameni, Rice और Kamara. कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए needed है. So there is a report from Mirror that Anthony Marshall, Tony Van der Beek, Dean Henderson, Phil Jones, and Axel Tuanzebe and Eric Bailly wants to leave Manchester United. Please go. पहली फुर्सत में, Please. पहली फुर्सत में. अपार्ट फ्रॉम डीन, बासा पहली फुर्सत में निकलो, बिकॉज मेरे को लगता है, इवन एज मच एज आई लव डाया, मेरे को लगता है कि टेन हाग विल प्रेफर डीन एंडरसन. लेट्स सी वो कैसे पैन आउट करता है, बिकॉज लास्ट सीजन भी आई थिंक टेन हाग वांटेड हिम एट आईएक्स फॉर अ लोन, ऑन लोन. सो आई डोंट नो, बट लेट्स सी. सो काफी सारे टॉपिक्स आज टच करने हैं, तो ब्रीफली बात करेंगे हर टॉपिक पे. विल या नॉट गो इनटू द डिटेल्स अ लॉट बिकॉज बहुत सारी न्यूज है भाई, बहुत सारी न्यूज आज यस, डिस्कस करने को. Rafael Varane, and I'll go back and forth for everything. ठीक है. Rafael Varane injured again. This is या a season where I'm a little disappointed in Rafael Varane in terms of his injuries. या बहुत ही क्रूशियल गेम. आई थिंक स्पर्स लिवरपूल सिटी के अगेंस्ट भी वो नहीं था. और कौन सा गेम नहीं था, आई थिंक अटले नहीं. He has missed what? हाँ, एटलेटिको फर्स्ट लीग भी मिस किया था ना उसने. He's missed 14 games. हाँ, सो ही इज मिस्ड. हाँ, बहुत ही क्रूशियल गेम्स इज मिस्ड. और उसका इंजरी ऑल ऑफ अ सडन हैज बिकम एन इशू, बिकॉज वी थॉट कि वो एक रिलायबल एवर प्रेजेंट वो नहीं है. सो या
Very, very surprising. True, true. For me, it's a disappointment in Rafael Yeah, Varane that he has been injured so much. Uh, Next season, I don't know how next season is gonna be like because World Cup is coming. Sabka focus will be on World Cup. In players' absolutely. mind, Yeah. it will be there in their heads. Pratik ka comment I want to take. If board doesn't give full freedom to Ragnik Ten Hag and gives wages to only deserved ones, then nothing will happen. United will become a mid-table club. Uh, we are we are very close to being a mid-table club right now. Right now. Yeah, And इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ विद द एक जो आया है रिपोर्ट दैट एरिक टेन हैग वांट्स द यूनाइटेड जॉब ऑन हिज टर्म्स कितना इम्पोर्टेंट है एंड एरिक yeah, टेन हैग इज ऑलरेडी इन द गेम ठीक है ऑलरेडी समझ चुका है कि यूनाइटेड बोर्ड से कैसे निकलवाना है एंड ही इज ऑलरेडी पुटिंग हिज मूव्स ठीक है ये फिलर mhm, ऐसे ही बाहर नहीं आते हैं ठीक है yeah, इट कम्स फ्रॉम योर सोर्सेस क्लोज सोर्सेस जो तुमको पुश करवाना है एंड यू सो यूनाइटेड का होल स्ट्रक्चर फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स वर्क्स ऑन द परसेप्शन ठीक है यूनाइटेड का yeah, परसेप्शन कैसा है वो हर एक ट्रांसफर से पहले यू विल सी फिलर्स फॉर द ट्रांसफर एंड इट्स फिलर्स ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट बाहर जा रहा है वो यूनाइटेड की साइड से ही आता है उनकी साइड से ही ब्रीफिंग आता है तो दे चेक yeah, कि परसेप्शन क्या है एंड इफ द परसेप्शन इजंट गुड दे फक इट अप yeah, सो ये सिचुएशन है so Eric Ten Hag already showing that how he's gonna do things. He wants a lot of control in terms of transfers specifically. He thinks that it's a big step in rebuilding the Manchester United, the great Manchester United, which is well, falling off the perch. it is, or I'll go back to the sentence you said, कि we are close to being a mid-table team. We are actually a mid-table team right now. जो हिसाब से हमारे स्क्वाड का मेंटालिटी है, कुछ प्लेयर्स को निकाल दो आप Oh, ऑब्वियसली. mentality तो relegation Apart वाला है. from the exactly, where we are actually a mid-table club right now. I'm so sorry to say this, but जो situation has been this season has been pathetic. So जो players को हम I, गेन I करते I आ रहे हैं, don't agree with you totally because the last two seasons were top four. we were we were, but that's what I'm saying, कि you're saying close to, but अगर this summer things doesn't improve, we are officially a mid-table club, and we don't want to improve Hmm. any more further. Or regarding Ten Hag wanting full control over things, which is understandable, क्योंकि आप recent में देख लो, both Jose and Ole struggled, because they were promised some things behind the scenes and they got nothing. So उनको promise किया था कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, and they got bullied in the end. So ये नहीं होना चाहिए from here on. So I know things Hmm. have been starting to gather a space, like John Motto, एक उसको as an assistant और एक deputy football चाहिए. Ralph is there, Darren Fletcher is there. So let's see. I mean, कुछ भी speculate करना is an stupidity right now. But let's hope कि in the summer situation changes. और अभी भी हमने देखा था कि Ten Hag said कि the club is consulting or talking to him before making decisions for the ingoing outgoings and incomings and contract renewals for the summer. So let's see क्या होता है. Okay, I'll run through the comments quickly. काफी सारे हो गए. Pep to coach Brazil, maybe. वो तो उसके प्लान्स में कब से है आई एम टेलिंग यू मैनचेस्टर सिटी का नेक्स्ट मैनेजर का वर्क इज ऑलरेडी इन द प्रोग्रेस एंड पेप को कहाँ जाना है कौन से साल में जाना है दैट्स आल्सो इन द प्रोग्रेस ठीक है सो ही इज वेरी मेटिकुलस अबाउट इट प्रत्युष इज आस्किंग पार्टी कब दे रहा है नए जॉब का प्रमोशन तेरा हुआ है ठीक है तू पार्टी दे पहले दोनों मतलब भी कि दो इसका चलो. प्रमोशन प्रत्युष का प्रमोशन कैसा हुआ है उसका वाईफाई बंद हो गया बोलो पैसे भर भाई सिविल स्कोर गिर जाएगा ठीक है दूसरों के नाम से कनेक्शन लेना बंद कर अमर दोनों सिटी गेम्स नहीं था लिवरपूल भी नहीं था चेल्सी डिडंट गेट द कॉन्टेक्स्ट वो वरान वाला he's talking about the amount ओके of games he's missed.
हाँ 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 हाँ. Okay. 14 games, so it's quite a lot. Yeah, आशिक इज आस्किंग मीत भाई, आप रियली सोच रहे हो कि आप ये पूरे फ्रिंज प्लेयर्स को इजीली बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेजेस? सी, 5 ऑफ द प्लेयर्स आर फ्री. ठीक है, वो तो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, निकालो. ठीक है. एंड फॉर द प्लेयर्स लाइक मार्शल, बेसाका, बेसाका इज अ ट्रिकी वन. इफ वी आर गेटिंग अ राइट बैक वी वुड सेल हिम, अदरवाइज विल नॉट. मार्शल इज गॉन. जो भी पैसा मिले, एट लास्ट वो लोन पे जाएगा, पर वो यूनाइटेड में नहीं रहेगा. That's my perception. बाकी आप जो मेंशन किए हो, कवानी इज गॉन, मार्टा, लिंगार्ड ऑल फ्री में गए. मैकटोमने won't be sold, and McTominay hasn't मगवायर भी नहीं doesn't है, deserve to be sold. बी Okay, सोल्ड या। जितना भी हम उसको कहते हैं he's a bang average player, but he has been one of the most available players, and you need such players in a squad. तो वो स्क्वाड प्लेयर के हिसाब से रहेगा ही रहेगा. आई डोंट वांट हिम टू बी सोल्ड. पर अबाउट अगर वो स्क्वाड में नहीं होता है तो यू फील कि वी नीडेड सॉरी मकटोमिन इन दिस गेम। ऐसा हुआ है इन दिस सीजन, सो यू कांट अफोर्ड टू सेल मकटोमिन एटलीस्ट दिस विंडो। और मगवायर कहीं जा नहीं रहा, सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दिस in as much as we in as much as most of the fans want to see him going. I don't think so he's going anywhere soon. मीर भाई का नेटवर्क है। एनीवेज, एवर्टन का न्यूज़ है, फेबियन डेल्फ जो अनअवेलेबल था, ही विल बी अवेलेबल फॉर अ गेम। डोनी वैन ड बीक ऑब्वियसली कांट प्ले बिकॉज उसका वी आर द पेरेंट क्लब। एंड्रॉस टाउनजेंड और कौन है भाई दूसरा, मैं नाम बोल रहा हूँ, और कोई तो एक मिडफील्डर है, दे आर डेफिनेटली आउट फॉर द गेम। अपने साइड से कवानी वरान, दे आर नॉट देयर। कवानी वरान और कौन सा है, मैं मिसिंग समवन एल्स। Ronaldo is back, huge boost. I think we saw in the last game as well how we struggled without him, massively without him. Needby is back. Arya was, guys, I'm in a hotel and the Wi-Fi sucks here, so होता है कभी कभी. yeah. So I was talking Everton का injury record. Sorry, squads जो है जो नहीं है, जो अवेलेबल है जो नहीं है. Hmm. So Ashik is saying we are creating a structure internally, but one more dream is bring Paul Mitchell as a deputy director. So there has been a lot of talk for a deputy director. Uh, so look at the structure right now. We have 4 or 5 people, doing the Ad Woodward's job. Darren Fletcher is there, Marto is there, Ralf Ragnick is there as a consultant. तो जो एक बंदा करता था, here there are 4 or 5 people needed to do the same job. I mean, hats off to Ed Woodward. एक सैलरी पे काफी लोगों का काम कर लेता था. लवली लवली बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर. Gaurav is saying, by almost done it, Anak, and welcome back, Meet Bhai and Vignesh Bhai too. Uh, thank you, Gaurav Thank Bhai. you so much. Thank you so much, Bhai, Gaurav bhai. and really sorry I wasn't We available yeah, for. we missed you guys too. अरे गजब भाई, मतलब बहुत मिस किया मैंने तो. I love doing this. Honestly, I love Yeah. talking to the सेम, पर people अभी and रिसेंटली coming live बहुत here. या मीत भाई का भी जॉब का चल रहा था, ही फाइनली गॉट अ जॉब, सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। प्रत्युष भाई का भी प्रमोशन हो चुका है, सो ही इज आल्सो स्टक इन हिज वर्क। मेरा भी मार्च एंड था, सो प्रॉब्लम चालू थे। अपना ये मुदीत भाई तो दुबई चले गए, सो वो भी है। आनंद भाई का भी एग्जाम्स का इशू चालू है, दैट्स व्हाई एक्चुअली रिसेंटली ये सब इश्यूज आ रहे थे। So don't worry. From here on, we'll try to keep the consistency, or we'll try to come live regularly from here on. Thank you so much for your support. Am It I means audible? a lot. Yeah, yeah, भाई, दुख होता है गौरव भाई जब नहीं आते तो. Honestly, every day when I yeah, am not here, it feels like I'm missing out on a part of my life. yeah. And yes, Eric Ten Hag will Sucks. be in Old Trafford. Fuck off, Vignesh. Imagine from here on we get Pochettino. I don't mind. Let Pochettino come. It will increase my clicks.
बिकॉज जितना रोएंगे ना लोग आफ्टर वॉचिंग एवरी मैच डे, आई थिंक अपना चैनल का प्रोग्रेस ज्यादा होगा, सोच ले अब. I'll get to abuse you every single day. Tilak, we are all very good. Hope you are good too. Yeah. प्रत्युष, राफ ने बताया होगा एरिक टेनाक को कि क्या चल रहा है यूनाइटेड में. That's why एरिक टेनाक wants his on its own terms. True, true, true. And even वंगाल ने बोला होगा, even वंगाल ने बोला होगा कि भाई Yeah. be careful. Uh, Mm-hmm. and issues at Manchester United are very public. You don't, if you and I can figure out, वो तो मैनेज कर रहा है इतने साल से आयक्स जैसे क्लब को, उसको तो Yeah. पता नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली पता होगा. Exactly. अफीफ भाई बोल रहे हैं कल एवर्टन का गेम डाइसी लग रहा है. प्रो इंस्टिंक्ट बोल रही है. ये यूनाइटेड का हर गेम डाइसी होता है. यू डोंट एटलेटिको के गो इन. बाद से तो हमारे सभी डाइसी ही है, सबसे लगे ही पड़े हैं जब से, मतलब उसके पहले भी लगे हुए थे, बट एटलेटिको के टाइम पे होप था कि इफ वी कैन ग्राइंड दिस रिजल्ट आउट, कुछ तो होप मिले फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, वो भी अब नहीं रहा. सो देखो, मिरेकल इफ वी गेट द टॉप फोर. ये देखो, ये इटरनल ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, वो रियलिज्म को नहीं पहचानते हैं, ठीक है, कसम से नहीं पहचानते, इसलिए ये इतने साल से पोचेटिनो को भी सपोर्ट करता है. ठीक अरे है. भाई. कहीं ना कहीं ऐसे उसका इसका ऐसे दिल चीरोगे ना तो मार्शल भी मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मार्शियल बिल्कुल नहीं. आशिक सेज राफ को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा सुना है कंसल्टेंसी रोल में उसको, मैं सिर्फ 6 डेज का इन्वॉल्वमेंट. आई थिंक इट्स बुलशिट. यू नो, इफ दे डू दैट, इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड डज दैट, जो आउटब्रेक होगा, सो मैच गोइंग जनता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन सच थिंग्स, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द क्लब मस्ट जैसे जो ग्रुप है. सो इफ these reports are actually true, they will burn it to the ground, you know. वापस प्रोटेस्ट इतना तो ठीक है शायद ना हो, बट राफ रैग्निक, it's राफ रैग्निक का लेगेसी टू. If he या. builds Manchester United from here along with Eric Ten Hag, उसका लेगेसी होगा भाई. एग्जैक्टली. सो सी. अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो he'll leave first. हाँ, एग्जैक्टली, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर ही, ऐसा कुछ होने वाला है या होने वाला होगा, व्हाई वुड ही स्टे? ही लीव. वो रुकेगा ही नहीं ना. वो क्यों खुद का नाम खराब करके लेगा हमारे चक्कर में? Ayan says a manager wants to manage a club. अभी तो बेस्ट मैनेजर जो चल रहा है दैट इज आशीष नेहरा. uh, Ashik is asking who will be the assistant coach, Rene Milstein or McLaren. Oh, both are strong reports. Whosoever we get in, both are very good choices. और ये विग्नेश टेढ़ा हो गया है. नहीं नहीं नहीं, ये रेन रेन मुलिस्टीन का एक्चुअली रिपोर्ट मैंने पढ़ा रिसेंटली, दिस इवनिंग ओनली, कि ही इज द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. आरवी से, वैन पर्सी से भी वी स्पोक about being Ten Hag ka second, sorry, assistant, but he refused. He doesn't want to leave for private Okay. reasons. So Mulestein at the moment is leading candidate ahead of McLaren, but let's see क्या होगा. Hmm. Okay. Let's get into some of the quotes of Ralf Ragnick today. We are all aware of the importance of the game for both sides. For me, game plan and tactics is one thing for tomorrow, but probably the most important thing is mentality and attitude. इसको पढ़ के मेरे को क्या लगता है पता है, सुन के भी, शर्म करो यूनाइटेड प्लेयर्स, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा ना, थोड़ा सा फुटबॉल और एटीट्यूड के साथ खेल लो, ठीक है, वरना तुम्हारा करियर शॉर्ट हो रहा है, तुमको पता भी नहीं चल रहा है Yeah. एज अ प्लेयर. ठीक है, यू कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द क्लब. एंथनी Yes. मार्शल का करियर इज इन द ड्रेन राइट नाउ Yeah. एंड ही इज एट हिज पीक ईयर्स. तो अगर तुम्हारा एटीट्यूड दिखता है ना फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, डिफॉल्ट वर्क, तो ना आप जॉब में सर्वाइव कर सकते हो, ना आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा अगर बेसिक चीजें ही नहीं करोगे तो. ठीक है.
Yeah. उसके बाद करने के बाद आउटपुट नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बट अगर ये नहीं है तो आउटपुट तो आना ही नहीं है। एंड Hmm. एज अ मैनेजर, एज अ कोच, आफ्टर दिस डिबाकल ऑफ एंथनी मार्शल इन सविया, ठीक है, दी अदर यूनाइटेड प्लेयर्स जो इजीली जा सकते थे, उनको भी अच्छे क्लब्स उठाने से पहले पार्ट बार डरेंगे। Yeah. वही। और ये जो रो रहे थे सिंस जब से ओले था यहाँ पे कि टैक्टिक्स नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्लानिंग एंड एवरीथिंग, देयर इज नो अरे अभी प्लान बी। बोल रहे हैं ना, सो रेफ मतलब रैगनिक अभी को क्या। कोच करना नहीं आता है, ये भी आ गया है। एग्जैक्टली, प्लेयर्स आर नाउ, मतलब हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि रैगनिक ने भी किसी टॉप क्लब को मैच नहीं किया है, उसके पास भी टैक्टिक्स नहीं है, तो मतलब ये कब तक चलेगा? आप हर एक बार हर एक कोच पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। सो समटाइम्स यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। जिस पे हम जिस जिस वाइब्स की वजह से ओले को नाम रखा जा रहा था, द सेम वाइब्स गॉट अस इनटू टॉप टू, बैक टू बैक टॉप फॉर्म, सॉरी। थर्ड एंड सेकंड। सो गौरव सर मीता आपके चैनल पे आया था। विशेष नहीं, विघ्नेश है यार। विशेष क्या लगता है तुमको इसमें? क्या विशेष लगता है? बहुत खुश था या मैं उस वी दिन। वी बहुत एंजॉयड एंजॉय हैविंग किया यू ये। टू। या या यस, कीप कमिंग, एंड वी ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू कम हियर, पिंग अस एंड विल गेट यू हियर। या Uh, when Percy won't come, his son just joined the PSG academy. When Percy का तो रूमर भी नहीं है. When नहीं नहीं Percy नहीं, is था not था। in the नहीं, consideration. आज था एक रूमर जहाँ पे दे सेड आज कि है. वी आस्क्ड वन पर्सी, बट ही रिफ्यूज्ड ड्यू टू प्राइवेट रीजंस, Okay. and he personally feels कि he is not ready to take such huge job. आशिक says विघ्नेश भाई, but रेने हमारे केरला ब्लास्टर्स में आके डिजास्टर करके गया. Even Babatao didn't work at हाँ, Kerala होता Blasters. है, होता है। अब उसके लिए पूरा आपका स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए ना। अब ऑल ऑफ अ सडन रोनाल्डो को उठा के केरला ब्लास्टर में डाल दोगे और बोलेगे भाई 50 गोल मार फॉर अ सीजन, दैट्स नॉट गोना हैपन। तिलक 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 बहुत कमेंट कर रहा है कब से अबाउट फोर्जा फरारी। सो यही बात है कि चेंज हो गए रेगुलेशंस, तो फरारी इज बैक। ठीक है, तो एक डिफरेंट सेटअप में डिफरेंट थिंग्स एंड पीपल स्ट्राइव। ठीक है, तो इट्स, आई डोंट थिंक इट्स वेरी मच कंपेरेबल। होता है। Ayan says that attitude needed for tomorrow onwards. भाई सिर्फ एटीट्यूड दिखा दे। एक नॉर्मल सा एक मतलब वो अपना प्लेग्राउंड वाला भी दिखा देंगे ना, फिर भी काफी अच्छा कर सकते, काफी टैलेंट है। बट उतना भी एटीट्यूड नहीं है, एक स्कूल का टीम अच्छा एटीट्यूड लेके उतरता है पिच पे। या रशफोर्ड का एटीट्यूड हर रोज बिगड़ रहा है, आई थिंक। वी वांट टू, नो, आई डोंट थिंक रशफोर्ड इज गेटिंग सोल्ड। एंड नहीं। टॉकिंग अबाउट मार्कस रशफोर्ड, उसके आसपास जो पूरा अपना प्लेयर का लिस्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ वेन रूनी, इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट्स, भाई डंडा दे देंगे। ठीक है, प्राइवेटली डंडा दे देंगे, एंड ही विल बी बैक ऑन, एटलीस्ट एटीट्यूड वाइज he'll be doing better. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट रशफोर्ड। अगर नेक्स्ट सीजन भी ऐसा जाता है ना, तो ही इज ऑन एंथनी मार्शल वे, which I don't think will happen to Rashford, या but then you never नहीं know. होगा। You never know. How much we spent this summer and W. आशिक समर भाई, एंड विंटर विंडो, समर एंड विंटर विंडो इज आई थिंक से। अच्छा, समर एंड दिस, समर में सो तो क्योंकि जनरली ये वो जब भी दोनों टॉप ही फोर इवेंट मिस और। होता है, हम्म। जब भी टॉप फोर मिस होता है, वी रफली स्पेंड ओवर 150 मिलियन। ठीक है, so in 150 million today, you get two transfers. If you are going for someone like Kane and a good CDM, you'll get two transfers from a striker and a CDM. So expect 3 to 4 transfers. दो बड़े players, third one would be a small ticket वाला like Alex Telles हो गया, या फिर a free transfer. So we always go for a structure wherein there will be a high money signing, 60, 70, 80 million kind of a player,
मार्की प्लेयर, देन देयर विल बी अनदर जो 40-50 मिलियन के आसपास है, एक 10-15 मिलियन का और एक फ्री। ये यूजुअली स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है। सो रफली ये 150 मिलियन वापस कवर करेगा, बिकॉज इस बार सेल आई होप हो जाए थोड़ी। We might squeeze in 4 to 5 players. I hope we squeeze in 4 players. Uh, and James Garner, I was just going to talk about James Garner. So he has been making a lot of noise, and rightly so. Played very, very well. Has 11 G plus A in 33 games he has played. He is doing well. बड़े मैचेस में प्रीमियर लीग टीम्स के अगेंस्ट खेला है, सो दैट वुड बी वन एडिशन। सो इसकी वजह से शायद एक प्लेयर कम हो। And there was a report that Eric Ten Hag had 45-minute call with Donny van de Beek saying that he is the number six. Interesting. Yeah, that's just the fake one, I think. उसको लोगों ने Hasto is फेक saying, करके ये किया अच्छा. है। So Hasto is saying Anthony should replace Marshall. Anthony Marshall है भाई वो. The नहीं वो Anthony you're talking about has a different spelling. आयक्स या एंटोनी या वो भी इंजर्ड है फॉर द अंटिल द एंड ऑफ द सीजन। उसको भी यहाँ आने की गाई है। Why not? Ayan says plus I think 100 to 150 million will be the net spend. Players will be sold. बहुत wages free होंगे. Yes, that should be the ideal uh, figure as per me as well. 150 का मैं एग्रीगेट बोल रहा था कि विदाउट द सेल्स अपना अपना सेलिंग इज नॉट गुड, सो आई डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम सेल्स। सो जो ग्रॉस रहेगा वो 150 मिलियन के आसपास होना चाहिए अगेन, शायद 10-20 ऊपर चला जाए। होप वी स्पेंड ओवर 200 मिलियन एंड गेट गुड प्लेयर्स इन। Sachin says we should go for low profile players. Look at Liverpool signing Cavallo. Liverpool has been doing very good in terms of their recruitment, and उनका selling भी अच्छा है। Coutinho जैसा sell मिल जाता है उनको। Uh, low profile players, yes. बट System सी players, yes. ये इस पे एक मेरा पॉइंट है सचिन भाई। दे अब ऐसे लो प्रोफाइल साइनिंग दे कैन अफोर्ड टू डू इट नाउ बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड आर्टिकल फॉर देम। यहाँ तक आने के लिए उनको 4 साल लग गए, ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर वी गेट ऑन दिस पाथ, देन हम ऐसे लो बजट कर सकते हैं। अब सोच लो कि अब ये लो बजट साइनिंग या अंडर रेटेड प्लेयर जैसा, जैसे भी जो भी नाम रख लो, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अंडर प्रेशर ही क्रम्बल्स एंड डजंट परफॉर्म। लेट्स से डैन जेम्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल, ऑल्दो ही वाज वेरी गुड ऑफ द बॉल एंड एवरीथिंग, he didn't work out, so people labeled him as a flop and we ended up selling him. सो वी आर नॉट एट दैट लेवल जहाँ पे हम ऐसे रिस्क ले सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। इसके साथ एक फुटबॉल एंथुसियास्ट कमेंट है, वीडीवी कैन कांट प्ले नंबर 6, ही इज मोर ऑफ एडवांस प्लेयर, यूसीएल फेवरेट है, ही वाज प्लेइंग सेकंड स्ट्राइकर। सो वीडीवी इज अ सिस्टम प्लेयर। अगर वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो वी माइट सी हिम एज अ नंबर 6 एज वेल, बट देन वो सिस्टम के अकॉर्डिंग और उसका एक स्पेसिफिक रोल होगा, ठीक है, नो एंड he'll नो be नो expected to do that role. No, even in a very good structure system, I don't see him as number six because obviously Ajax का setup different है, उनका league different है, यहाँ पे physicality का बहुत ही issue है, and I don't think he can survive as a sole number six. So even at i'm Ajax, he i'm not played saying soul. mostly as a one of the numbered eight. So I don't see him as a number six. Ajax maybe he wasn't a sole defender, defensive midfielder. So no, I don't think so. I think it depends on the system कि उसको कैसे खिलाना चाहते हैं, but number नहीं, 6 for Manchester United, I also see that it's very unlikely, but yeah. you never know, we might not even get a number 6 in the window। ऐसा ऐसा perception है मेरा तो United को लेके in terms of transfers। I hope it improves, but you never know with these money suckers, dividend fuckers। uh, Vishal, hello. Nice to have you here. The Donny number 6 news was from the Sun, but Susan Sun. ठीक है, but we should discuss the good news or the different news. Ragnick can be helpful in scouting and to pick up players under the radar.
स्काउट तो पूरा चेंज कर रहा है यूनाइटेड का, मतलब कोई कोई क्या करते हैं, 800 राइट बैक स्काउट किए एंड दे गॉट एरन वन पेसागा, गॉड। माइंड ब्लोइंग। राल्फ को प्लेयर स्काउट करने से पहले पूरा स्काउटिंग डिपार्टमेंट स्काउट करना पड़ेगा नया, देन थिंक हाँ, अबाउट गेटिंग न्यू प्लेयर्स। Ashik says, I don't think we don't need to move window for rebuild. Buying a DM and secure top four and solves the 60% of the United problems. I cannot, I disagree with it so much, this statement, that a DM will solve 60% of our problems. A DM will be the biggest part in solving the problems. I agree to that, but he'll solve 60% problems, not at all. यूनाइटेड के इतने स्ट्रक्चरल प्लस द स्क्वाड इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, फिजिकलिटी, एंड बिगेस्ट बीइंग मेंटालिटी, एंड ईयर ऑन ईयर अगर वो चीज हो रही है ना, तो देर इज समथिंग डीप, डीप लाइंग इश्यूज विथ, फ्रॉम द रिक्रूटमेंट टू एवरीथिंग, एवरीथिंग। आप हर मैनेजर के अंदर कैसे फेल कर सकते हो, एंड यू देन या से दैट आई एम तो 100 million वर्ल्ड कप विनर, I play amazing at France. I need 500K per week. I'll stay 6 months in Dubai. So बट I don't think it will solve at all. हाउ pathetic he was against Leicester, हाउ pathetic। Hmm. मतलब वो खून खोल रहा था उसको देख के, एंड यू आर सेइंग कि फ्रांस इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वहाँ पे मजा आता है खेलने। व्हाट द फक, आई मीन आपका खुद का परफॉर्मेंस देखो, एंड देन यू ब्लेम इट ऑन कोच एंड द प्लेइंग स्टाइल एंड एवरीथिंग, कि क्या बोलते हैं, मेरा एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है जहाँ पे मैं खेल नहीं रहा। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? मतलब ऐसा थोड़ी आप बच्चे हो स्कूल के कि मेरे को एक ही रोल दो। Any ऐसे footballer, थोड़ी। any footballer when they are आप भी खेले होंगे आपके स्कूल टाइम पे या या कॉलेज टाइम पे या आई हैव। वॉट एवर। इफ यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो आपको एक यू स्पेशलाइज लेटर ऑन। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो, यू आपको बेसिक्स तो पता है फुटबॉल के, विच कैन बी या यूज्ड इन एनी पोजीशन, ठीक है। या अगर आपको फ्रेड को जैसे लेफ्ट बैक खिलाना पड़े, तो उसको पता है ना कि व्हाट, ठीक है, ही इज नॉट अ प्रॉपर लेफ्ट बैक एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 10 out of 10 परफॉर्मेंस, बट वो फुटबॉल खेलना तो नहीं भूल जाता है ना, कि इसको या पास कर कहते हैं, पास एंड मूव, तो बेसिक चीजें हैं। फॉर एनी पोजीशन दोस बेसिक थिंग्स डोंट चेंज। तो ये फिक्स पोजीशन ना होना, और फिक्स में क्या, मिडफील्ड में ही तो खिला रहे हैं, तेरे को एडवांस भेज देते हैं क्योंकि तेरे को गोल स्कोर करने का चल रहता है, ठीक है। यू प्लेड एज अ फॉल्स नाइन, ठीक है, बिकॉज देयर वाज स्क्वाड इश्यूज। तो उसमें क्या, और यू डोंट नो द बेसिक्स हाउ टू स्कोर अ गोल। न, और उल्टा इस सिचुएशन का फायदा उठा के अच्छा परफॉर्मेंस करने के अलावा यहाँ पे इसका उल्टा ही चल रहा है, कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जम रहा, उधर नहीं जम रहा। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? आज आज F1 का तिलक ने काफी मेंशन किया, लेट्स टॉक अबाउट F1। जो बैकअप ड्राइवर होता है, ठीक है, जो तीसरे नंबर का ड्राइवर होता है एक टीम में, उसको रेस करने नहीं मिलता है। कभी कभी गलती से मौका मिल गया ड्यू टू हेल्थ और वॉट एवर रीजन दूसरे ड्राइवर का, तो क्या वो रेस में से घुसते ही मतलब ऐसे भूल जाता है क्या कि गाड़ी कैसे ड्राइव करना है। आई थिंक इट्स नॉनसेंस, नॉनसेंस। मतलब एग्जैक्टली। विघ्नेश एक्टिवा चलाता है तो उसको ना वो जुपिटर चलाना नहीं आएगा, ऐसा बात है। उसको थोड़ी बोला है कि भाई तू सेंटर बैक या गोलकीपर बन जा, ठीक है। अगर सिंपल है। गोलकीपर भी बना दो तो वो भी सेव कर सकता है, कूदना है, बॉल को डायरेक्शन देखना है, ठीक है। यू डोंट एक्सपेक्ट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस, बेसिक्स तो कर सकते हो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हाँ, ध्रुव ज्योति पाल, आई होप आई प्रोनाउंस इट करेक्ट। आप क्या जॉब करते हो? विघ्नेश का जॉब इज, ही स्टैंड्स फॉर पॉचिटिनो, so that's a या sad life. या So I'm into finance. I'm a business finance manager in a consulting company. Vignesh is also in finance, I think, accounts and या finance. या Yeah. So yes, ये करते हैं हम। बाकी हम YouTube करते हैं, मजे करते हैं। नया नया शुरू किया है।
सब्सक्राइब कर लेना if आपने नहीं किया है तो। Fred is very good player. He just need a true team. नहीं 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 नहीं। See, Fred is a good player, very good player. आप मत बना दो। काफी मिस्टेक्स उसने करे हैं। ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट इतना इतना रीसेंसी बायस नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग अ प्लेयर। ठीक है, इट फॉल्स टू द मगवायर पार्ट एज वेल। जितना उसको अब्यूज मिला है probably a little more than he deserved, but then उसका परफॉर्मेंसेस भी ऐसे रहे हैं। So Fred is a decent player, बट उसके लिमिटेशंस हैं, उसमें मिस्टेक्स हैं। ठीक है, सो वो चीजें जो है वो है। पीएसजी के अगेंस्ट मार्शल के मिस थे वो ग्रुप स्टेज में लास्ट ईयर, बट देन फ्रेड का भी रेड कार्ड था। Yeah, सो इट्स नॉट लाइक ही हैज बीन फॉल्टलेस थ्रू आउट द सीजंस। but सो at least he चीजें gives his 100%. At आई least आई वो देख कैन के नेवर आता है. फॉल्ट हिम फॉर हिज एटीट्यूड। Yeah. At least attitude अच्छा है बंदे का. वो कम से कम वो तो नहीं रोता मुझे यहाँ खिला दिया वहाँ खिला दिया. खेलता है. वो लेफ्ट बैक भी मैं तो कहीं भी स्ट्राइकर भी खेल लूंगा, खिला दो। ये एंटाइटल्ड बिचेस जो होते हैं ना, ये साले एग्जैक्टली. एंटाइटलमेंट इतना घुस जाता है ना लोगों में कि भाई मैं तो कुछ बहुत बड़ा हूँ। भाई तू कुछ नहीं, एक प्लेयर है यूनाइटेड का। यू आर पेड एन हैंडसम फी। जो तेरे दिमाग में तेरे को लगता है ना तू वर्ल्ड क्लास है, वो तू 5 साल पहले था, अभी नहीं है। जहाँ तू पिरलो के साथ खेलता था, यू टू डू द a lot of work as well. Yeah. Thank you uh, for subscribing. Yeah. Happy to have you here. Mm. It's like me hiring a cook to build a house. And I'm loving his comments, man. And comments are so blunt and so straightforward. It's like lasers are responsible for everything. The reason we are in the match because we are a laughable football structure all these years. It is like me hiring a cook to build a house. वो तो है ही. वो तो है ही. हम ever since Just सर एलेक्स have के some बाद हम. shame. Wait. I want to read his one more comment. Have Yeah. some shame. Fred is 29 and he won't even start for Arsenal. Let's let's not compare us to Go there. Arsenal. We are becoming the new Arsenal. I agree, but then let's not drop down to Arsenal. But then Ayan, I take your point, man. I take your point. Fred has so many mistakes in him, but you know what? I'll defend Fred on this front. जो विघ्नेश ने भी बोला, he gives his 100%. जो बेसिक है, और अपने क्लब में अभी बेसिक भी लैकिंग है। Yeah. एंड अंडर Ralf Ragnick, he has played better. Exactly. Under everyone actually, apart from Jose, Ole के अंडर भी he was our very very good और अभी भी है. So ठीक है चलता है गलतियां होती है. But at Football least try enthusiast, not. I answers, we are not the Brazilian national team. We can't build a team around Fred. We can't build a team. That's the who issue. who Fred who छोड़ दो, said we we want can't. to build around him? भाई खतरनाक. So I'll talk about few more. So by the way, Garnacho has scored again against Yeah. Chelsea. Yeah. That guy is moving very rapidly. I'll be very surprised if he's not in the squad for next season. You know, Next season he trained with the first team squad this week. so completely जब mathematically चला जाएगा top four, he might even get to start 1 or 2 games this season. Him, Yeah. Hannibal, and probably 1 or 2 more players. I hope. You know, I hope मेरा that. पर्सनल ओपिनियन है. आई थिंक वी शुड ड्रॉप पॉल पॉगबा कंप्लीटली. वो कितना भी बड़ा मैच हो, लिवरपूल हो, सिटी हो, सिटी तो हो गया, लिवरपूल हो या स्पर्स हो या आर्सेनल हो, हनीबाल को खिलाओ या किसी भी Vignesh, I thought मिडफील्डर को about it. खिलाओ. I thought about it a lot. या, क्योंकि if you are running this club and you are the manager and stuff, he is a big impact in the dressing room, blah blah. हम्म, But if you drop Paul Pogba, ठीक है, हम्म, you are you are playing it in favor of him कि मैं तो इंजरी फ्री रहूंगा, मैं मेरे नेक्स्ट क्लब में आराम से जा रहा हूँ, मेरे को तो घिस भी नहीं हम्म, रहे, मेरे को मुफ्त का पैसा मिल रहा है। हम्म, ठीक है। हाँ. so नहीं तो it's उसको. थोड़ा tricky.
नहीं फाइन, आई गेट योर पॉइंट, पर उसको घिस के भी हमें क्या आउटपुट मिल रहा है? आई मीन सी अगेंस्ट लेस्टर क्या परफॉर्मेंस था। ठीक है, घिसो तो कुछ आउटपुट भी तो मिले, कुछ आउटपुट ही नहीं है तो इससे क्या मतलब है? वो पैसे तो ऐसे भी खा रहा है, वैसे भी But खा रहा है। he'll be, all I'm उसके saying is चक्कर में he'll हम be टॉप very फोर happy. क्यों ये करें? If we do this, he'll be very happy. हाँ वो तो जाने दो, वो तो वैसे भी चला ही जाने वाला है, क्या है मतलब है? अभी कोई किसको क्या लगे, क्या मतलब है? जस्ट कि हम अपना टॉप फोर क्यों सेक्रीफाइस करें टू जस्ट टू मेक श्योर कि वो खेले हर वीक, और उससे हम मेहनत करवाए बिकॉज हम पैसे दे रहे हैं। Yeah. So 15 people are watching us, guys. If you haven't subscribed, please subscribe. We bring in a lot of content. थोड़े अभी on and off रहे हैं over the last 1 or 2 weeks, but we are very consistent, and we are trying to do a lot of things in the background as well. Like we had a conversation or two with some journalists to bring them over here, come to the Indian channels, you know. So if you subscribe and you watch, it helps us like and comment एंड प्लीज शेयर ऑल्सो सो दैट हमको बहुत हेल्प हो जाता है उस नंबर से हमें खुशी भी मिलती है काफी जब हम वीडियो एंड करते देखते हैं कि दिस मैनी पीपल व्यूड अस फॉर दिस मच पीरियड so it really motivates us. It really puts a smile on all of our faces. So uh, and if you want to be here, you can be here. Just ping us through our socials. uh, Mudit says, boys, Pogba still doesn't have a club. पीएसजी का रूमर आ रहा है कुछ जाएगा लाइकलीस्ट कहीं तो डेस्टिनेशन जाएगा वरना पीएसजी जाएगा। यूवेंटस जाएगा नाक कटवा के सैलरी कम लेके यूवेंटस जाएगा और बोलेगा कि मैंने सैलरी कम ली टू प्ले फॉर अ बेटर प्रोजेक्ट ठीक है तो कुछ तो करेगा वो कुछ ना कुछ हो जाएगा बट वो लेट हिम गो हाँ वो पॉगबा कहीं भी पे जाए, वेस्ट भी भाड़ नहीं कर रहा है वो भाड़ में जाए फिलहाल, हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता। Ashik has given a list of a few players. There are a few players that are coming up from United Academy. We'll have a whole video on that very soon again. Fred Rock says Fred is actually a decent player with single pivot anchor. Without one, he's just like a headless chicken running around. ठीक है मगवार को बोलो पॉगबा पे टैकल मारे काम हो जाएगा भाई वो पहुंच ही नहीं पाएगा मगवार इज मतलब इट्स लाइक द मेट्रो के जमाने में ही इज द मीटर गेज ट्रेन Mudit is asking Vignesh is still hopeful for top four. I know this sounds funny, but I am, because I still feel कि स्पर्स और आर्सेनल के बिग गेम्स अभी भी बाकी है, so that you know helps us in a way, but that only will happen जहाँ पे मतलब कल से we start on winning each and every game। अगर कल भी हम हक देंगे तो मतलब खत्म ही है, मतलब अच्छा ही क्या खेलने के। वैसे भी होप्स तो है ही नहीं, बट हम जस्ट मेरा होप ये है कि वो दो टीम्स पॉइंट्स ड्रॉप कर दे, बस दैट्स इट। जैसे कि वी सॉ अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, आर्सेनल को दे पेल दिया उन्होंने। कुछ भी हो सकता है, वी जस्ट हैव टू विन आवर गेम्स एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। So Arsenal का fall was coming. वो काफी टाइम से आ रहा था. They put a very amazing run, but वो या it's for fall. मतलब Arsenal है. But then we are so bad that Arsenal and Spurs लुक्स and even गुड। I think West Ham deserves a lot, rather than United. आशिक says विघ्नेश भाई ऐसे बिग मैच में सीधा मैच रिव्यू डालेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत डिप हो जाता है it will आशिक I totally disagree with this. You put a young player in a squad, ठीक है, he'll always do good. हाँ, वो 200 टक्का देगा अपना। वो जो हंगर Exactly. लेके आएगा ना पिच पे कि भाई नहीं, मुझे आज कुछ तो प्रूव करना है, वो अलग ही लेवल का हंगार होता है। एलांगा को देख लो और कोई एग्जैक्टली। भी आप देख लो मार्शल का पहला मैच देख लो यार मतलब क्या बोलूं मैं साला वो एक कमेंट्री और वो एक गोल लेना फालतू उसके 7 साल हमारे बिगाड़ दिए लाइफ के Gaurav is asking, can we adapt a 4-4-2 system? I think with Ilanga and Sancho on the wings, Bruno as second striker, CR7 as striker with two number six, Matic and McTominay. सो दिस इज फॉर टुमारो और 4-4-2 व्हाट? could be. Uh, Gaurav, the game has evolved in the sense कि 4-4-2 अभी इतना यूज नहीं होता बिकॉज द मिडफील्ड का जो यूजेज है वो काफी ज्यादा हो गया है दैट्स व्हाई वी आर क्रेविंग आउट फॉर अ डीएम ठीक है
सो मिडफील्ड में आप दो के साथ जा रहे हो और ब्रूनो को थोड़ा एडवांस, काफी एडवांस खिला रहे हो. सो दैट लीव्स our midfield light, and our midfield is already light in terms of quality of our players. तो भाई हम इतने ऐसा लाइट है. है कि लेस्टर only needed 2 or 3 passes to get into our final third. Only 2 or 3 passes. मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना देख के, पर क्या मतलब, but that's where we are right now, unfortunately. And I don't think 4-4-2 helps in that sense. I'm saying please don't understream right now. I just joined. भाई पहले से तो तुम. I think he predicted Vaibhav का comment पहले से ही. So Vaibhav is saying hello. I hope you are good, Vaibhav. Hello, hello. So Mudit is taking shots on Vignesh. He's like इसलिए पहुंच नहीं आ रहा है Viggy. Vignesh sir, we are yet to face Liverpool, Arsenal, and then man we can't even win them versus Everton. I am truth bombs. We cannot compare a player's performance for country and club, different team setups, different managers, totally different game. And yes, नेशनल मैचेस वो लीग नहीं है यार, वो मतलब इट्स अ नॉकआउट काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, ग्रुप स्टेजेस भी No, होते हैं बट इट्स आर या पार. no. I slightly disagree. मेरा different view है इस पे. It doesn't matter आप किसके लिए खेलो, क्लब हो या कंट्री. आपको बेसिक तो आते हैं. You still have the hunger to play football. आपका जॉब ही है फुटबॉल खेलना. So on top of that, you're playing for Manchester United, the biggest brand in world football. So if that badge doesn't give you the motivation to play, just like you have the motivation to play for your country, what's the point in staying here? ठीक है वो विघ्नेश, अभी तो जा रहा है अगर. I'll throw this question to you. ठीक है, क्या. तेरी कंपनी में तेरे को बिना काम करे पैसे मिल रहे हैं, वहां जाके 2 घंटे बैठ के खाना पीना खा के No, एक्सेल खोल के वो लॉग इन करके बंद करके वापस आ जाने का. ठीक है, ट्रेनिंग में yeah. जाओ, चिल करो, खाना खाओ, घर जाओ. क्योंकि 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है, तो इतना लेट तो ट्रैवल नहीं करता है. ठीक है, बहुत अंधेरा हो जाता है पुणे में 5 बजे. तो प्लेयर्स को कंफर्टेबल नहीं होता है अपने विघ्नेश जैसे. ठीक है, अरे तो समझो यार, मतलब इट्स अगर तो, तुमको आराम से फ्री में पैसे मिल रहे हैं तो व्हाई वुड यू पुट इन योर वर्क. ठीक है, वो that स्पॉन्सरशिप. point I get it, but isn't it time for my boss to kick my ass now, because he हु इज योर clearly बॉस? knows कि मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूँ. No, हु no, इज योर I'm बॉस? going with I'm going with your example कि अगर मैं कुछ काम कर नहीं रहा हूँ, my boss हाँ knows कि वही मैं ऐसे एग्जांपल सिर्फ दे आ रहा रहा हूँ. हूँ, लॉग इन कर हु रहा हूँ, इज कुछ योर नहीं कर रहा हूँ. बॉस? So he needs to kick me out. हु इज योर बॉस? जो भी यूनाइटेड है. में बॉस इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, वही एंड दे प्रॉब्लम है. ब्लेम द. नहीं, तू बोलता कि नहीं नहीं बॉस को ही नहीं आता, ये कंपनी सही से नहीं चल रही है, देखो अब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो यार बॉस ही पूरा गलत है. कितने भी बॉस बदल लिए फिर भी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो तेरा क्या फॉल्ट है? आई मीन देयर इज नो ओनरशिप फ्रॉम योर साइड. ठीक है, वो होपफुली वही तो अभी सब चेंज होना चाहिए. लेट्स सी, नहीं तो दलदल तो चालू ही है अपना. फंसते ही जा रहे हैं. Gaurav says Manchester United should play on sit back and counter using pace of Rashford and Sancho on the wings. Classic Ole style. जो आप बोल रहे हो. आई थिंक वी आर पास्ट इट, बिकॉज वो करना होता तो कॉन्टे को ले आते हैं. आई थिंक इफ एंटोनियो कॉन्टे वुड हैव बीन यूनाइटेड्स मैनेजर, we would have gotten top 4 this season, probably. But then our players are so bad. Even Ralf Ragnick is trying to do a lot of things. I in football, in footballing world, you cannot have more intelligent people than Ralf Ragnick. नहीं है. That नहीं सो. professor. तो लोग, आई एम उस, सॉरी बट हाँ लोग हाँ बोल रहे हैं विनेश. कि Ralph doesn't know how tactics and coaching and everything, but we as a fan clearly have seen the difference, have we not, since Ole and under Ralph. हमने clearly improvement देखा है on the ball, and we keep the ball much more than we did under Ole. अपना transition, अपना positional play have improved, no doubt. I mean final third में भी still suck, उसमें कोई दो राह नहीं है. और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि एवर सिंस राल्फ केम, ग्रीनवुड का इशू हो गया, कवानी फिट नहीं रहता है, रोनाल्डो ऑल्सो इन एंड आउट. उसके बाद रैशफोर्ड का फॉर्म इज डिप्ड, सांचो
थोड़ा picked up, now he again dipped. So majority of your क्या बोलते हैं attacking department है, it's struggling. So आप रोनाल्डो के 18 गोल्स निकाल दो from this season, we are nowhere, we are literally nowhere. So you अरे can't ये blame Ralf Ragnick hypothetical for that. I hate it so नहीं नहीं much. है, So नो नो ठीक है हाइपोथेटिकल, बट ये भी हाइपोथेटिकल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है क्या अंडर राउफ? तो अगर एक कोच आज का ही उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो कि टैक्टिक्स एंड सेटअप इज वन थिंग, बट एटीट्यूड एंड मेंटालिटी इज होल लॉट डिफरेंट। and तो this is ये the तो same guy who praised our first match mentality when he came into the एग्जैक्टली charge. एग्जैक्टली सो आई स्लाइटली डिसएग्री, जो भी बोलते हैं कि राल्फ ऐसा है वैसा है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत से डिसएग्री करते हैं, बट इट्स अबाउट टाइम कि जो भी ये वीक मेंटालिटी के प्लेयर्स हैं उनको स्टार्ट किकिंग आउट, क्योंकि अब बहुत हो गया। यू कांट कीप ऑन ऑलवेज ब्लेमिंग इट ऑन मैनेजर्स। ऑलरेडी 2 मैनेजर्स आपने सैक कर दिए उसके चक्कर में, अब ये तीसरा नहीं होने वाला। Gaurav, I'll take your comment in a while. Before that, I want to quickly talk about एक Ragnick का conference का comment today. He said he was asked about Ten Hag. He said that I don't intend to speak about any possible new managers. From what I know, all the managers with whom the club have so far spoken are top managers. If this includes Ten Hag, then it's also true with him. That's all I can say at this stage. दिख रहा है, मेरे को Deflection आ स्माइल गया है दिख रहा बंदे है, को. मेरे को तेरा स्माइल दिख रहा है। खुशी दिख रही है मेरे Why not? Gaurav was saying the reason why I'm saying this is because our midfield cannot rotate the ball. हम लोग का midfield ball नहीं चला पाते हैं against good pressing teams. अरे कोई भी टीम के आगे नहीं चला रहे हैं भाई. यार। तो Midfield फाइनल छोड़ थर्ड में दो. आप क्या उखाड़ ले रहे हैं? काउंटर पे भी हम फाइनल थर्ड में क्या उखाड़ रहे हैं? अब लेस्टर के साथ ही देख लो, एवरी टाइम वी वर ऑन अ काउंट, इन अ सिचुएशन टू अटैक द फाइनल थर्ड। सांचो भी पिस पुअर था, एलंगा भी इक्वली वर्स। एवरी टाइम वी वर इन द अटैकिंग थर्ड, हमने साइडवेज पासेस, बैकवर्ड पासेस, आई मीन बोथ ऑफ देम Gaurav, दे the ट्राई टू टेक ऑन पीपल। mentality of players are gone. या दे हैव गिवन It अप। was evident in Atletico का first leg, Atletico का second leg. You are playing Champions League का 16 का round, and your mentality is gone. And Leicester तो इतना दर्द हुआ मुझे against Manchester City as well कि why are they even playing this match? They मतलब यार मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है वो फीलिंग डिस्क्राइब करने को कि मतलब एग्जैक्टली। डिस्गस्ट होता है डिस्गस्ट देखते हुए कि इतने इतने जिसको हम एडमायर करते हैं मतलब I'm losing my words because the players you admire, the players you love, जिसके पोस्टर्स है तुम्हारे घर में, तुम जिसके टी शर्ट्स पहन के घूमते हो, their name is chanted by the 75,000 people. What they do? Nothing. तो and you know what? एक sports person का mentality is way different from the usual mentality. They are always combative, competitive. They want to do better. ठीक है. लीड बैक नहीं होते स्पोर्ट्समैन. अपने तो रिएक्टिव छोड़ो, प्रोएक्टिव तो छोड़ो, रिएक्टिव भी नहीं है. एटलीस्ट ओले के अंडर वो रिएक्टिव थे कि गोल खा रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं. इस साल तो वो भी नहीं है. एंड दे आर नॉट बैड प्लेयर्स. इफ यू आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड यू हैव सम टैलेंट. फॉर श्योर यू हैव सम टैलेंट. सो दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि दिस विंडो, दिस डिसीजंस जो हम लेने वाले हैं, these are going to be very crucial for the club for the next decade or more than that, because if we fuck up क्या? right now, यहाँ से कम बैक करना would be very difficult क्योंकि फाइनेंशियली तुम न्यू कैसल से भी compete नहीं करने वाले हो in 2-3 years टाइम. ठीक है. न्यू कैसल भी तुमसे ज्यादा करके जाएगा. एंड
If we don't improve now, don't be surprised Newcastle United finishing above Manchester United on a regular basis. एक टाइम पे Exactly. मैनचेस्टर सिटी competing with मैनचेस्टर यूनाइटेड was not even thought of. आज हमारा नाम नहीं लिया जाता है उस टीम कैडर में. Yeah. लिवरपूल बहुत टाइम लगा. दे आर बैक, बट देन डू यू वांट अ लिवरपूल वाला 30 साल का गैप? वी आर ऑलरेडी एट व्हाट 9 years now since Yeah. the Premier League, or even close to it. Closest we came was last year. Ole का 12 points का gap. जोजे का was what 18 19 points जब वो second finish किया था. Yeah. So that wasn't even our best season in terms of finishing second. That was our last season. So बहुत काम करना पड़ेगा in terms of changing the whole structure, and इतना easy नहीं होता है because our ownership isn't good, which is open to see for all. But the only blessing for me right now is Eric Ten Hag or even Mauricio Pochettino, whoever comes in, they will be trying to make a legacy along with Ralf Ragnick, Yeah. along with so many other people in the club who are appointed. आपका जॉब वो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, इफ यू गेट यूनाइटेड का प्रीमियर लीग, you become the elite in the world. Abhi you are not. You are good, decent, everything, but you are not the best of the best. And इतना ईगो लेके चलते हैं players and everyone. You want to be the best. Yeah. Cristiano Ronaldo is best because he wants to be the best every single day. बोलने को नहीं, वो करने को होता है उसको. Okay, Vignesh, your predictions for tomorrow and the lineup prediction and the score prediction. Oh, lineup. Lineup. I feel it's the same to ये अपना लेस्टर के साथ जो था वो सेम होगा. The only change I think जो होगा will be Matic, जो पॉसिबली पोग्बा के रिप्लेसमेंट में आएगा. आई फील होपफुली, जो पर्सनल ओपिनियन भी वैसा हो. अपार्ट फ्रॉम दैट रोनाल्डो स्ट्रेट इनटू द स्टार्टिंग 11. उसका Hmm. एब्सेंस हमने देखा अगेंस्ट लेस्टर. देयर वाज नोबडी इन द बॉक्स, लिटरली नो वन, एंड वी पास्ड इट साइडवेज एंड बैकवेज. So he is crucial. So De Gea, Telles, Maguire, Lindelof, Varane because he's out for another 2-3 weeks now. Yeah. Dallo. उसके बाद मार्टिच, फ्रेड, ब्रूनो, सांचो, रोनाल्डो और आई वांट टू से रैशफोर्ड बट आई फील इट विल बी एलांगा. और प्रिडिक्शन तो मतलब क्या ही करूं. बट I'm gonna go for 2-1 2-1 for whom? for us, 2-1 for United. अच्छा. Ayan says 1-1. Vishal Maybe, says 2-1 for United. So for me, the score would be somewhat similar to yours. And why not start Dean Henderson? Start करवा दो यार, बेचारा नहीं, क्या see, फर्क I, पड़ता है. I, I like that as well क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं सीजन में. So why not give him the remaining games? So I do like that, but I still feel कि नहीं होगा वो. I will start. Back four would be is Shaw fit? I think Shaw is fit, right? No, no, no. Shaw भी out है ना, 4 2 3 weeks. Shaw Varane हाँ out हाँ है. हाँ. Shaw वरन दोनों आउट है. So it will be Telles and why not Lee Grant? यार उसको भी खिलवा लेते हैं. चलेगा, मेरे को वो भी चलेगा. फॉर्म हीटर. कोवार भी खिलवा लो. कोवार को ही खिलवा लो. So the back four would be uh, Dallo, Telles. Hmm. Telles. Center back would be the classic Lindelof, Maguire. Midfield, uh, Fred will start for sure. Fred and Bruno to start, and who will be the third midfielder? मैकटोमने फिट है. Injured है. वो भी इंजर्ड है. Hmm.
It's between Paul and Matic. Paul Pogba and Bruno Fernandes, with Fred being the number six. And the front three would be, it has to be Ronaldo, Elanga, Sancho. But then I won't be surprised if Elanga is dropped for Rashford. Yeah, yeah. And देखते my हैं. prediction is a 2-1 win for Everton. जगह. कसम चैनल बंद करवा दो यार, ये मतलब शुरू होने के पहले डिप्रेशन चालू. कसम. मतलब तेरे को सच बता, तूने 2-1 विन बोला, तेरे को ऐसे इंट्यूटिवली लग रहा है कि नहीं ऐसा लाइन आएगा, ऐसा स्कोर लाइन आएगा? इट्स जस्ट आउट ऑफ द होप टू पुश कर रहा है कि नहीं 2-1 विन बोलना है यूनाइटेड के हाँ, लिए? बस बोलने के लिए पॉजिटिवली बोल रहे हैं. एग्जैक्टली बट है ना? डर तो है मैं सही अंदर बोल से. रहा है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ, विघ्नेश। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आई एम तो ऑनेस्ट, आई एक्सेप्ट फील कि एक्सेप्ट कल कर हम ले, जीतेंगे. पोचेटिनो इज अ बॉटलर। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. यू नीड टू एक्सेप्ट। Anyway, thank you so much, guys, for tuning in. Hope to Yeah, see you all for the match day. Let's hope United win. In any situation, I'll always hope United to win. Okay. Although my prediction is different, it's Everton again, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों अलग अलग टाइप के यूनाइटेड ही खेल रहे हैं। बोथ आर प्लेइंग बुलशिट फुटबॉल। तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। We could come away with a win. We could come away with a strong win. We could lose it as well. मतलब it won't be a surprise to anyone if we lose it. But just because uh, I I I wish कि एवर्टन लूज अगेन एंड थोड़ा रेलिगेशन और हीट अप हो, बर्नली उनको देन माय आई होप एवर्टन गेट्स रेलिगेटेड। Crude, but it is what it is. uh, Ayan says I need to send you a clip. Where can I contact? So, Ayan, you can connect to our Instagram or Twitter, United Bedtime Talks, the same name. You can search for it. We post on Insta and Twitter regularly as well. So you can share it with us over there. Aj, I don't think I've shared the uh, socials today, but वो previous videos में होंगे, आपको मिल जाएंगे easily. Okay, thank you so much, guys, for tuning in. yeah, Have a good night, and let's hope for the win tomorrow. yeah. GGMU. Good night, everyone.